Class 3 in your MCB of Oxford New Pathways. We today learn the poem The Young Dandelion. Dandelion is a kind of weed, खरपतवार टाइप का एक प्लांट होता है जिसमें इस तरह के लीव्स हैं उसकी थोड़ी सी नुकीली और फ्लावर्स आर ऑफ दिस टाइप। ये कहीं भी कैसे भी कभी भी उग जाएगा और आप उसको चाहे उखाड़ भी देंगे फिर भी दोबारा हो जाएगा। तो उसकी जो रेजिस्टेंस है और उसकी जो डिटर्मिनेशन है टू ग्रो, द पोएट हैज सीन दैट and he is seeing this plant with that perspective. So let's read the poem. I am a bold fellow as ever I was seen, with my shield of yellow is the grass in the grass green. He says that मैं एक बहुत बहादुर व्यक्ति हूँ और जो कि कभी जाना गया है, और जो मेरा जो कवर है, शील्ड है, मुझे प्रोटेक्ट करती है जो, वो है मेरा येलो कलर। और कहाँ मैं उगता हूँ? हरी भरी घास में। यू मे अपरूट मी फ्रॉम फील्ड एंड फ्रॉम लेन, ट्रैम्पल मी, कट मी, आई स्प्रिंग अप अगेन। आप मुझे जड़ से उखाड़ दीजिए, चाहे आप मैं खेत में उगा हूँ या फिर मैं किसी सड़क किनारे उगा हूँ। ट्रैम्पल मी, ट्रैम्पल मीन्स टू क्रश समथिंग बाय स्टेपिंग ऑन इट। कुचल दीजिए मुझे, काट दीजिए, फिर से मैं उगाऊँगा। आई स्प्रिंग अप अगेन। I never flinch, sir. Flinch means to make a sudden movement as a result of pain. कहते हैं मैं, तुम जितना मर्जी टॉर्चर कर लो, मैं बिल्कुल नहीं डगमगाता या जो है भागता नहीं मैं दर्द के मारे। So I never flinch, sir. I never move due to pain. Wherever I dwell. Dwell means रहना, जहाँ भी मैं रहता हूँ। गिव मी एन इंच सर, आई सुन टेक एन एल। अगर ज़रा सी जगह तो दीजिए आप मुझे, थोड़ा सा इंच दे दीजिए सर, तो फिर से मैं अपनी जगह बना लूँगा। एल इज़ अ मेजर ऑफ लेंथ विच इज़ 45 inches nearing. Now perhaps it's not used. Drive me from garden in anger and pride. I'll thrive and harden by the roadside. आप अपने जो गार्डन है आपका इतना सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ है, आप मुझे अच्छा नहीं समझते, आप मुझे निकाल दीजिए वहाँ से, भगा दीजिए। ड्राइव मी, चाहे आप गुस्से में ऐसा करें या घमंड में ऐसा करें, अपने जो है प्राइड में ऐसा करें कि भाई हमें ये वाला प्लांट नहीं चाहिए, ये तो जंगली खरपतवार है। आई थ्राइव, थ्राइव मीन्स आई लिव, एंड हार्डन और आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर। वेयर? बाय द रोड साइड। आप अपने गार्डन से मुझे निकाल दीजिए, मैं सड़क के किनारे उग जाऊंगा। नॉट अ बिट फेयरफुल शोइंग माई फेस, ऑलवेज सो cheerful in every place. I am not at all afraid of showing my face to everyone, and I am ever so happy, cheerful in whichever place I am. So this is a poem about dandelion, a plant. I have sent you a photograph of it earlier. I'll send you again. This is by Dina M. Mullock Craig. So let's appreciate the poem, understand it more. Who is the I in this poem? A young dandelion plant. What does the speaker claim are her main qualities? Courage and grit. Means it is very brave and determined. Who is the speaker speaking to? People who try to remove him or her. किससे बात कर रहे हैं ये? Plant. उन लोगों से जो उसको उखाड़ के फेंकते रहते हैं। Give reasons for your choice. इसमें आपको reasons भी देने हैं। I is a young dandelion plant who is talking about itself. And its main qualities are courage and grit, because even if we uproot it and throw it away, it again grows whichever place it gets and never dies. It's an optimistic plant. And it is talking to those who are trampling it and uprooting it and throwing it away from the garden. So the plant is talking to them. What does shield of yellow refer to?
द पेटल्स ऑफ अ डेंडेलियन, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ना उनके बारे में. So in the last you have to write the reason that it is talking to people who try to remove war because it is talking of being crushed and removed. Read the underlined words from the poem carefully. You may uproot me, trample me, cut me, drive me from your garden. So the underlined words tell us that the Dandelion is treated with dislike. People don't like it. Columns A and B have a few end words from the lines in the poem. Match the rhyming words. Fellow, yellow. Seen, green. Lane, again. Fearful, tearful. Face, place. So now you can see different kinds of weeds around yourself. Try to identify them. So they are amaranth, Canadian thistle, chickweed, lamb's quarters, crabgrass. This is crabgrass. Quick quack grass, shepherd's spurs. So these are different kinds of weeds which grow in the gardens, which actually are not grown deliberately. We don't want to grow them, but they come up themselves. So this finishes this poem. Now let us read another story. You have already read We Saved a Whale, and now we are coming to the rainbow fairies. You know, when there is a rainbow in the sky, when does it come? After the rain, when there are droplets of water in the atmosphere and the sun rays pass through them, there is refraction and a rainbow is formed by them. So can you identify the different colors starting from the bottom to the top? In the last you have violet, and then indigo, then blue, then green, yellow, orange and red. So these are the colors of a rainbow. They are known as vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So try to learn it. Two little clouds one summer's day went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. दो नन्ही घटाएं थीं एक गर्मी वाले दिन में. जब वो हवा में उड़ती हुई जा रही थीं तो इतनी तेज़ी से उड़ रही थी कि उनके सर ही टकरा गए एक दूसरे से. दोनों रोने लग गईं. What does it mean that the clouds have come in the sky and it has started raining? Old father's son looked out and said, "Oh, never mind, my dears. I'll send my little fairy folk to dry your falling tears." अब जो है जब बारिश रुक गई है तो फादर सन ने उनको देखा और बोला, अरे कोई बात नहीं, रो नहीं, मैं अपनी नन्ही जो परियां हैं उनको तुम्हारे पास भेजता हूँ और तुम्हारे जो आंसू गिर रहे हैं वो उनको सुखा देंगी. That means the rain will stop. One fairy came in violet and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange and red, they made a pretty robe. तो उनमें से एक परी वायलेट कलर में थी, एक इंडिगो में थी, एक ब्लू में, एक ग्रीन में, येलो, ऑरेंज एंड रेड में, और उन्होंने रो मीन्स लाइन, बहुत ही प्यारी सी एक लाइन बना ली. ये देखिए सबसे नीचे इंडिगो है, फिर वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड. They wiped the cloud tears all away, and then from out the sky, upon a line the sunbeams made, they hung their gowns to dry. उन्होंने जो क्लाउड्स के जो आंसू थे उनको पोंछ दिया और उसके बाद स्काई से हट गई और जो सनबीम्स थी ना, सूरज की रोशनी की किरणें,
तो उन्होंने एक लाइन बना रखी थी, उन्होंने अपने गाउन्स उन पे सूखने के लिए डाल दिए. What does it mean? They made a rainbow. So it is symbolic to the form of fairies. The poet has made the children learn about the different colors of the rainbow. Whenever you see a rainbow in the sky, try to identify the colors with which the rainbow is made up. It is written by C.M. Hadley. So now poem appreciation. The poem is about how rainbows are formed. Why do the clouds cry? The clouds bumped their head into each other. What season is it? It is the rainy season after the summer season. Match the facts the poem refers to. Clouds bump their heads. Thunder. Clouds cry. Rain. Father sun looks out. Sun shining after rain. Dry the falling tears. Stops raining. Fairies of different colors come out in a row. The rainbow appears. So this is a sequence of the colors in a rainbow. Name them. Like first one is violet, then blue, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So remember, at the bottom is violet color and uppermost is the red color. Remember this thing. Okay, it shouldn't be the reverse. So see, this is the sun and this rainbow is formed.